नगरी हो काशी की और जहां स्वयं श्री काशी विश्वनाथ का वास हो। हर हर महादेव। गुड इवनिंग एवरीवन। On the behalf of Respiratory Conclave Conference entire team, I Abhishek welcomes you all. And our respected faculties, our chief guest Dr. S.N. Sankhwar sir, please come on guys. Welcome, greetings from our Respiratory Conclave Conference 2024 sir. It's gratifying to note that agenda of the scientific session covers the wide range of the बेसिक एंड एडवांस रेस्पिरेटरी डिजीजेस एंड डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। आपके पास कोई सवाल जवाब, चूंकि सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं लगातार। ऐसा है अस्थमा में लोगों की सांस फूलती है कि टोटली ये अंडर कंट्रोल रखी जा सकती है। खतरनाक टीबी क्या होता है और इसे हम कैसे पहचानें? टीबी एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है जो एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग को स्प्रेड करता है। एआई का अभी जो हम रोल यूज करते हैं वो है डायग्नोस्टिक्स में। हमें सबको सीखना है कि हमें कहीं ना कहीं इस पोल्यूशन में कम करने के लिए, और इसका इलाज न किया जाए तो सांस लगातार फूलती रहती है और आगे ऑक्सीजन जैसी जरूरत पड़ने लगती है। राइनाइटिस में इम्यूनोथेरेपी की कितनी इंपॉर्टेंस है? जो बच्चे बेचारे अभी छोटी साल 3 साल 5 साल 10 साल के अंदर दमे में परिवर्तित ना हो जाए, उसके लिए इम्यूनोथेरेपी इज द ओनली इटियोलॉजिकल ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड। दीप प्रज्वलन करके हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। फर्स्ट जुलाई डॉक्टर्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग केक कटिंग करेंगे। He is not only teacher but he is a very nice human being, always helping. I work with him. स्वास्थ्य का ख्याल रखने आपको ही करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका ही कार्य कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। प्रीति की तरफ से एक पत्रिका हर 3 महीने पे लॉन्च करते हैं। Now moving towards further session, would like to call Dr. Sakshi Pathak. Myself, Dr. Sakshi Pathak, Program Coordinator for Respiratory Conclave Conference 2024. As we gather on the banks of River Ganga, I'm also very proud to share with you that this year we'll be completing 10 years and this will be our 11th Respiratory Conclave Conference. First session, would like to call Chairperson Dr. Sanjay Kumar sir, IMS BHU, and Dr. Mohit Bhatia sir, IMS BHU. My immense pleasure this time to welcome my mentor and my guru Dr. Vivek Nangia. The range of procedures includes diagnostic and therapeutic options for both benign and malignant diseases of the lungs. We've done it in about 2 patients so far, had very good results, but then for some reason there has been a lot of controversy around the entire modality of treatment in these patients. Thank you very much. So to present Angvastram and memento to our young and upcoming Dr. Swapnil. Swapnil has opened the gate for the interventional pulmonology. The foundation for this lecture has already been very well set by our earlier speaker. Open biopsy, they were in fashion. Or the other option was a transbronchial biopsy. To present memento and Angvastram to Dr. Prashant sir. Dr. Vivek Nangia, the Director and Head of Pulmonology, Max Super Specialty Hospital, New Delhi. Good evening, everybody. At the outset, I'd like to thank Dr. Pathak for inviting me here this evening. It's really an honor. In fact, last year also he had invited me, but I couldn't make it. This year, I have postponed my summer vacation only to be here. And India continues to have the largest burden, contributing about 27% of the global incidence of tuberculosis comes from India. So more than 1/4 comes from India. Real brilliant answer for most of the questions for internist. So localized wheeze is also a very important in clinical examination.
ignore it, try to investigate. Thank you, sir. Moving towards our second session, Dr. Amit Johari sir, Dr. A.K. Singh sir. Dr. Prabhu Desai is the consultant chest physician at Leelavati Hospital and Research Center. Discuss a very simple day-to-day activities, so day-to-day management disease called airway disease. The session of Dr. Rajadhar sir. And a big congratulations to Dr. Pathak and the entire team for having arranged this meeting. A personal health challenge, I couldn't be there. And the speaker will be Dr. S.K. Pathak. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर नाइस इंट्रोडक्शन. हमारे सर गुरुजी भी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर. एज वी नो, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट टू नो द लंग्स फंक्शन, हाउ इट्स फिजिकली वर्क. Over to you, Dr. V.P. Singh sir. Dr. P.C. Kasuria is senior consultant on allergen immunotherapy in allergic asthma, where we are now. May I now request Dr. Rajendra Prasad, please come and address us on the clinical pulse and respiratory allergy. I'll start my lecture with this, that better than 1,000 days of diligent study is one day with great teacher. I am saying this for my mentor, Professor B.K. Khanna. Pathak asked me to speak something about interesting cases. Thank you very much. We have many books and many things. I think I have to go. And thank you very much. If you have any question, I love to answer. And I must appreciate Dr. Pathak that he asked me in 2014 when he started this कि सर क्या करूं कि ना. हमने कहा जरूर करो. हमारे अपने गेस्ट को धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे फार्मा टीम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे जो स्पॉन्सर हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा. मैं चाहूँगा इनको अनपसंद देकर सम्मानित किया जाए. मैं डॉक्टर पाठक और उनके पूरी इंटायर टीम को बधाई देना चाहता हूँ. और एक बहुत ही अच्छा शो पुट अप किया. इतनी अटेंडेंस होना, कंटेंट जो था मैं कहूँगा बहुत ही रिच एंड अपडेटेड कंटेंट था कॉन्फ्रेंस का, और इसको आगे बढ़ाएं. Thank you very much to everyone